So today we will discuss Ostwald's dilution law. Ostwald's dilution law. Let us consider an weak electrolyte Ba which ionizes as B plus and A minus ions. Suppose at time t is equal to 0, concentration of Ba is 1 mole per liter. So at that time concentration of ions B plus and A minus are 0 and 0. Since it is a weak electrolyte, an equilibrium is established between the oppositely charged ions and unionized molecule Ba. Suppose at equilibrium alpha moles of Ba, electrolyte Ba, dissociate. So alpha moles of B plus and A minus ions are produced. If concentration of Ba is C moles per liter, C moles per liter, C moles per liter, then at equilibrium suppose C alpha mole dissociate, then concentration of B plus and A minus ions are C alpha and C alpha. ଯେତେବେଳେ BA ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ 1 ମୋଲ୍ ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆଲଫା ମୋଲ୍ସ ଡିସୋସିଏଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ଆଲଫା. ଯଦି କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ C ହୁଏ ଦେନ୍ C alpha mole will dissociate and concentration of B plus and A minus ions are C alpha and C alpha. So at equilibrium concentration of electrolyte Ba is C into 1 minus alpha, B plus ion is C alpha, A minus ion is C alpha. We know equilibrium constant K is equal to B plus ion concentration into A minus ion concentration by electrolyte Ba concentration. Then this implies equilibrium constant K is equal to B plus ion concentration C alpha into C alpha by C into 1 minus alpha. So C cancels, C alpha square by 1 minus alpha, where alpha is degree of ionization or degree of dissociation. Since the electrolyte is weak electrolyte, so degree of ionization is very low. So 1 minus of alpha is equal to 1 since alpha is very low. This implies equilibrium constant K is equal to C alpha square, or alpha is equal to K by C raw root over. Then if the concentration of the electrolyte C is, if the concentration of the electrolyte C is that 1 mole of the electrolyte is present in V liter of the solution, then C is equal to 1 by V. So alpha is equal to K divided 1 by V raw root over, that is KV raw root over. So degree of ionization alpha directly proportional to square root of dilution, square root of dilution.
This is called Ostwald's dilution law, where the degree of ionization alpha is inversely proportional to square root of concentration, or degree of ionization alpha is directly proportional to the square root of dilution. Square root of dilution. Now let us discuss electrolysis. 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 Let us first define what is electrolysis. आम आगुरी कहते जे इलेक्ट्रोलाइसिस को वैद्युतिक विश्लेषण बोली कहा जाए। गोटे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रे एक्वस सॉल्यूशन रे बा तार मोल्टेन स्टेट रे इलेक्ट्रिसिटी पास करिवा द्वारा इलेक्ट्रोलाइट अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स रे डिसोसिएट है अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड आड़ को माइग्रेट करी इलेक्ट्रोड पाखरे डिपोजिट होंदी। सो इलेक्ट्रोलाइट रो केमिकल डिकम्पोजिशन हुए। Therefore, the process of electrolysis is defined as it is the process of chemical decomposition. Process of chemical decomposition of an electrolyte by the passage of electricity through its aqueous solution or in its molten state. तेबे गोटे इलेक्ट्रोलाइट रो सॉल्यूशन रे बा तार मोल्टेन स्टेट रे इलेक्ट्रिसिटी पास करिवा द्वारा इलेक्ट्रोलाइट रो जो केमिकल डिकम्पोजिशन घटे सही प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस बोली कहा जाए। अच्छा, देन द फर्स्ट पॉइंट इज जो इंस्ट्रूमेंट रे आमे प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को कैरी आउट करजंती दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एवं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रो कंस्ट्रक्शन केमती ना इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास वेसल which is called electrolytic tank. In the glass vessel, the aqueous solution of the electrolyte or the electrolyte in its molten state is taken. Electrolyte को नहीं suppose से electrolyte को हमें कहले BA. अच्छा, in the solution of the electrolyte, two metallic rods are dipped. Two metallic rods are dipped, which are called electrode. ये metallic rod को हमें electrode बोली कहले. And the electrode are connected to the two terminals of a battery through a conducting wire. इठी गोटे बैटरी को कनेक्ट कले through a conducting wire. The electrode which is connected
to the positive terminal of the battery is called anode, while the electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode. So this is the construction of electrolytic cell. Now the mechanism of chemical decomposition of the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे किभଳି भाବରେ केमिकल डिकम्पोजिशन होचे एवं इलेक्ट्रोड पाखरे केमिति डिपोजिट होचे तार मेकानिज्म हम बर्तन कंसीडर करिया। मु इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्यूशन रे बा मोल्टेन स्टेट रे नबा परे इलेक्ट्रोलाइट Ba ionizes as Bn plus A n minus oppositely charged ions produce कला। वर्तमान Bn plus ions गुड़िक पॉजिटिव ions हेतिबा जुगु they will move towards the negative charged electrode, that is they will travel towards cathode, and at cathode they will gain electron and will be deposited as neutral B atom. So at cathode reduction takes place, and this is primary change. प्राइमरी चेंज बोली कहीं कहते ना कैथोड पाखरे पहुंचवा परे पॉजिटिव चार्ज आयन्स गुड़िक इलेक्ट्रॉन गेन करी न्यूट्रल एटम रे कन्वर्ट हेले जदि से एटम गुड़िक पुणी आउ गोटे एटम सहित कंबाइन करे देन दैट विल बी सेकेंडरी चेंज किंबा से जदि वाटर सहित रिएक्ट कले आम एक सॉल्यूशन नहीं सी मतलब सेकेंडरी चेंज बोली कह एट एनोड एनोड आड़ को किए मूव करिवो ना नेगेटिव आयन्स An minus, since they are negatively charged, they will move towards the positive charged electrode, that is they will move towards the anode, and at anode they will lose electron and will be deposited as neutral A atoms. It is primary change. If atoms further combine, then it will be secondary change. So at anode there is loss of electron, so oxidation takes place at anode. Oxidation takes place at anode. Then on reaching their respective electrode, ions lose their charge and become neutral particle. That is primary change. Further जदि से माने एटम गुड़िक परस्पर सहित कंबाइन करती तेबे ताकू secondary change बोली कहुआ। Now let us consider examples, some examples of electrolysis, that is electrolysis of molten sodium chloride. Molten sodium chloride, molten sodium chloride, fused sodium chloride. Sodium chloride मेल्ट हवा परे आयोनाइज है Na प्लस एवं Cl माइनस आयन्स प्रोड्यूस कला। प्रोड्यूस करिया परे सोडियम आयन Na प्लस आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन्स गुड़िक दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. So at cathode the positively charged sodium ions get reduced. Reduction होगा by gaining one electron. गोटे इलेक्ट्रॉन गेन कले न्यूट्रल सोडियम एटम आकार डिपोजिट हेले. So reduction takes place at cathode. At anode chloride ions lose their charge by
losing one electron get converted into chlorine atom. This is known as primary change. Then two chlorine atoms combine to form chlorine gas. This is known as secondary change. एठी एनोड पाखरे ऑक्सीडेशन हला, सेकेंडरी चेंज रे क्लोरीन लिबरेट हला, कैथोड पाखरे केवल रिडक्शन हला, सोडियम डिपोजिट हला, कोनोसी सेकेंडरी चेंज नाही. सो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, sodium is deposited at cathode and chlorine is liberated at anode. Then consider another example, that is electrolysis of molten lead bromide. Molten lead bromide. Lead bromide in the molten state, it will ionize as lead plus 2 and 2 bromide ion. So at cathode lead ions get reduced by gaining 2 electron and lead get deposited, and at anode bromide ion lose 1 electron to form bromine atom. Then 2 bromine atoms combine to form bromine molecule. This is secondary change, this is primary change. Tebe electrolysis of molten lead bromide, in the process of electrolysis of molten lead bromide, lead is deposited at cathode and at anode bromine is discharged, bromine is liberated. Now let us consider another example, that is the electrolysis of aqueous solution of electrolysis of aqueous solution of sodium chloride. तमाने एठी सोडियम क्लोराइड को हमें मोल्टेन स्टेट रे नहीं नांती, हमें सोडियम क्लोराइड को जलीय द्रवण रे नहीं इन एक्वस सॉल्यूशन. तबे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन रे आयोनाइज है Na+ एवं Cl- आयन्स प्रोड्यूस कला, एवं वाटर मध्य आयोनाइज है H+ OH- आयन्स प्रोड्यूस कला. सो Na+ and H+ ion Na+ and H- ions, sodium ion and H+ ion, both positively charged ହେଇଥିବା ଯୋଗୁ both of them will move towards cathode, while chloride ion and hydroxide ion both negative ions ହେଇଥିବା ଯୋଗୁ both will move towards anode.
किंतु सोडियम आयन आउ H प्लस आयन दुईटा जाक आयन कैथोड आड़ को मूव करेंगे बट कैथोड पाखे केवल गोटे आयन डिस्चार्ज हम अर्थात गोटे आयन तार चार्ज लूज करिवो एवं कैथोड पाखे डिस्चार्ज हम बा लिबरेट हम बा डिपोजिट हम तेणु Na प्लस एवं H प्लस आयन दी जनक मध्यरु दीटा जाक कैथोड पाखे सेमानकर चार्ज लूज करिवे नाही केवल गोटे आयन प्रिफरेन्शियल डिस्चार्ज हम ये आम कहते जे प्रिफरेन्शियल डिस्चार्ज ऑफ आयन जेते बेले दी जन जाक कैथोड आड़ को मूव कले कैथोड पाखे से आयन ही डिस्चार्ज हम जार डिस्चार्ज पोटेंशियल अर्थात डिस्चार्ज हवापाई जो एनर्जी आवश्यक एनर्जी कम हो डिस्चार्ज पोटेंशियल जार कम हो तेणु हाइड्रोजन आयन रो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होइथिबा जोगु आट कैथोड हाइड्रोजन आयन्स लूज देयर चार्ज get converted into hydrogen atom. This is primary change. Then two hydrogen atoms combine to liberate hydrogen gas. This is secondary change. तेणु aqueous solution of sodium chloride रे सोडियम कैथोड पाखे डिपोजिट हवा परिवर्ते हाइड्रोजन गैस कैथोड पाखे लिबरेट है सिमिलरली आनोड आड़कू बोथ क्लोराइड आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन मूव करेंगे किंतु आनोड पाखे से आयन ही डिस्चार्ज हम बा डिपोजिट हम जार डिस्चार्ज पोटेंशियल कम थी between chloride ion and hydroxide ion, chloride ion has least discharge potential. Chloride ion रो discharge potential hydroxide ion रो discharge potential ठारू कम अर्थात क्लोराइड आयन डिस्चार्ज हवा पाई जेतिके एनर्जी आवश्यक करे हाइड्रोक्साइड आयन ठारू कम तेनु प्रिफरेंशियली क्लोराइड आयन विल बी डिस्चार्ज्ड सो एट एनोड chloride ions lose their charge oxidation हेले chlorine atoms पाइले primary change हला then two chlorine atoms combine to form chlorine gas. This is secondary change. इटा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आगुरी काउंसिल पढ़ी कहीं ना डिफरेन्स होची आम सोडियम क्लोराइड को मोल्टेन स्टेट रे नेले कैथोड पाखे सोडियम डिपोजिट है आनोड पाखे क्लोरीन लिबरेट है किंतु एक्वस सॉल्यूशन रो सोडियम क्लोराइड रे कैथोड पाखे हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एंड एट आनोड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड. देन नाउ let me say what is preferential discharge, preferential or selective discharge of ions. Preferential discharge बा selective discharge of ions रे कौन कहते ना जिते बेले कौन एक इलेक्ट्रोलाइट एकाधिक पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट तार एक्वस सॉल्यूशन रे एकाधिक पॉजिटिवली चार्ज्ड बा एकाधिक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स प्रोड्यूस करे तेबे सेते बेले इलेक्ट्रोड पाखे से आयन गुड़िक ही प्रिफरेन्शियली डिस्चार्ज हे जार डिस्चार्ज पोटेंशियल कम तेणु काटियन गुड़िकर डिस्चार्ज सिलेक्टिव डिस्चार्ज काटियन्स गुड़िकर ऑर्डर है पोटासियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम जिंक आयरन lead then hydrogen ion then copper +2 then silver then gold
तेबे एठी देखो आमे जतले सोडियम क्लोराइड रो एक्वस सॉल्यूशन नैथिले सेते बळे सोडियम आयन सहित हाइड्रोजन आयन मध्ये सॉल्यूशन रे थिला तेबे एठी प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन्स फॉलोज द ऑर्डर लेफ्ट टू राइट को बढ़ी बढ़ी के जाउछि अतएव डिस्चार्ज पोटेंशियल एपोर्ट को अधिका यार डिस्चार्ज पाई अधिक एनर्जी आवश्यक बा सोडियम रो डिस्चार्ज पाई अधिक एनर्जी आवश्यक हाइड्रोजन रो डिस्चार्ज होवा पाई कम एनर्जी आवश्यक तबे सिलेक्टिवली डिस्चार्ज हबो कि हाइड्रोजन आयन देन कंपेयर टू सोडियम आयन सो दिस इज द ऑर्डर एटा एपोर्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल एटा increasing tendency of discharge of cation at cathode. Similarly, for anions, sulfate 2 minus, nitrate, hydroxide, then chloride, bromide, iodide. Chloride, bromide, iodide. सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन रे आनियंस किए थिले क्लोराइड आयन थिला हाइड्रोक्साइड आयन थिला increasing tendency याड को बढ़िला increasing tendency of discharge of anion बा डिस्चार्ज पोटेंशियल याड को बढ़िला हाइड्रोक्साइड आयन रो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्लोराइड आयन रो डिस्चार्ज पोटेंशियल थारु अधिका अतएव हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होगा पाए अधिक एनर्जी आवश्यक क्लोराइड पाए कम एनर्जी आवश्यक तेणु प्रिफरेंशियली क्लोराइड आयन विल बी डिस्चार्ज्ड एट एनोड दिस इज नोन एज सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन्स एट द इलेक्ट्रोड एवं ए आमे कहले जे सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन्स रे if an electrolytic solution containing more than one type of ion is electrolyzed एकाधिक आयन्स थिबो से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे electrolyzed then that ion is first discharged which requires least energy से आयन ही प्रथम डिस्चार्ज हबो जहार डिस्चार्ज पोटेंशियल कम लीस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल हेतिबो पर डिस्चार्ज हवा पाए जहार कम एनर्जी आवश्यक होतो दिस इज नोन एज सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन्स देन we will consider two more example that is one is here attackable and non attackable electrode electrolysis of aqueous copper sulfate containing platinum electrode एटा को मैं नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड बोली कहउचंती नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड बोली केते बळे कहजिबो ना जते बळे इलेक्ट्रोड जो मेटल रे गठित इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ता सहित रिएक्ट करू नथिबो सेते बळे ताको नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड बोली कहजो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इनॉट इलेक्ट्रोड अच्छा इटी एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नैथिबा जगु कॉपर सल्फेट आयोनाइज हेई देला कॉपर +2 सल्फेट 2 माइनस एक्वस सॉल्यूशन नहीं चंती वाटर ये देला H+ OH माइनस तबे हमें काटियन कहा को पाइले ना कॉपर +2 H+ आनियन कहा को पाइले ना सल्फेट 2 माइनस OH माइनस तबे एठी बर्तन देखो जे पेयर ऑफ cation पेयर ऑफ आनियन एठी हमें सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन्स कथा कंसीडर करिवा
कपर आयन एवं हाइड्रोजन आयन मध्यरु कहार डिस्चार्ज पोटेंशियल कम कपर कहा पर अछि H+ आयन पर अछि तेणु यार डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हाइड्रोजन आयन ठाउ तबे सिलेक्टिवली किए डिस्चार्ज हबो कपर डिस्चार्ज हबो सो कपर will gain electron 2 electron and get deposited as copper metal at cathode एनोड पाखरे सल्फेट आयन अछि हाइड्रोक्साइड आयन अछि एवं या पाई मध्य सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन्स कथा कंसीडर करिया ऑर्डर कोन कहितले ना सल्फेट देन नाइट्रेट देन हाइड्रोक्साइड सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन्स याड को बढ़िला हाइड्रोक्साइड आयन रो सिलेक्टिव डिस्चार्ज टेंडेंसी बा डिस्चार्ज हमारा टेंडेंसी या ठार अधिका डिस्चार्ज पोटेंशियल एपट को बढ़ुची अतः सल्फेट आयन रो डिस्चार्ज पोटेंशियल या ठार अधिका यार डिस्चार्ज पोटेंशियल कम तेणु सिलेक्टिवली किए डिस्चार्ज हम हाइड्रोक्साइड आयन हम सो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस इलेक्ट्रॉन पाइल OH तापरे OH gives H2O plus O2 तेणु कौन करिया एठी बैलेंस करिया कहले 2OH कर दोची दीटा हाइड्रोजन दीटा ऑक्सीजन तेणु इटा हिजो हाफ O2 एठी मु 2 गुणिली माने एठी 2OH माइनस 2 इलेक्ट्रॉन 2H so at anode oxygen is liberated and at cathode copper is deposited copper deposit hela cathode पाखरे copper deposit hela anode पाखरे oxygen liberate hela this is the case where copper sulfate aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using non-attackable platinum electrode. Now, let us consider the electrolysis of copper sulfate solution using copper sulfate solution using attackable copper electrode attackable electrode बोली केते बळे कहजिवो ना when the electrode itself participate in the electrode reaction हमें एठी copper sulfate solution नै चंती तो copper sulfate solution आयोनाइज है कि कपर +2 एवं सल्फेट 2- आयन्स प्रोड्यूस कला वाटर आयोनाइज है H+ एवं OH- आयन्स प्रोड्यूस कला कैथोड पाखरे प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज अनुसार कैथोड पाखरे कपर दीटा इलेक्ट्रॉन गेन करी कपर आकार डिपोजिट हला एवं आनोड पाखरे आनोड को सल्फेट आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन मूव करिवा कथा किंतु एठी आनोड रे इलेक्ट्रोड निजे पार्टिसिपेट कला इलेक्ट्रोड रिएक्शन रे एवं आनोड रे कपर इलेक्ट्रोड डिजल्व ही कपर +2 आयन साकर सॉल्यूशन मध्य को पास कला बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन तेबे आनोड पाखरे कपर जेतिकी डिसअपियर कला कैथोड पाखरे कपर सेतिकी डिपोजिट हला at anode copper electrode is dissolved to form copper +2 ions and but no discharge of ions occurs तमाने सल्फेट आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन कोनोसी आयन सेठी डिस्चार्ज हेले नाही एठी कपर डिजल्व हबो सेठी कपर डिपोजिट हबो इटा होजे when attackable electrode is taken attackable electrode रे इलेक्ट्रोड निजे इलेक्ट्रोड रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करे नॉन अटैकेबल रे इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करिवो
9. So this is all about the examples of electrolysis. In the next class we will consider Faraday's law.